clinical manifestations of hepatitis B. Clinical manifestations of hepatitis B. That means कि clinical features या हम बोल सकते हैं जो sign and symptoms of hepatitis B, जो इसकी clinical features होते हैं, that are similar to those of other viral hepatitis. इसके clinical features almost same ही होते हैं जैसे other viral hepatitis के होते हैं, but जो nausea and vomiting होती है, nausea and vomiting, that is uncommon. That is uncommon in hepatitis B. And जो anorexia होता है, that is mild. Anorexia is mild. जो इसमें illness होती है, hepatitis B में जो illness होती है, that may be asymptomatic. That means कि without symptoms. Asymptomatic या इसमें minimal liver damage हो सकता है and with carrier state में. ये जो hepatitis B के sign and symptoms है, these are also found as acute or chronic. These are also found as acute or chronic hepatitis. In this one, acute hepatitis में क्या होता है? It is presented as hepatitis B, जैसे hepatitis A. जैसे hepatitis A में sign and symptoms जो आते हैं, वैसे इसमें भी आते हैं, but in acute hepatitis में. hepatitis B में जो acute hepatitis होता है, उसकी sign and symptoms जो है वो similar होती है just like to the hepatitis A. But इसमें क्या है, hepatitis A में jaundice appear होता है. इसमें jaundice जो है appear भी हो सकता है, may appear or not. jaundice appear भी हो सकता है या absent भी हो सकता है. और इसमें क्या, इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा हेपेटिक मैनिफेस्टेशंस आती है. दैट मीन्स कि एक्स्ट्रा हेपेटिक मैनिफेस्टेशंस, फॉर एग्जांपल इसमें रैश होते हैं, प्लूरल इफ्यूजन, मायोकार्डाइट्स एंड पेरिकार्डाइट्स. But in chronic hepatitis, में क्या होता है, जो chronic hepatitis है, that are presented in two forms. Chronic hepatitis found in two forms. That is, first one is the chronic persistent hepatitis, and second one is the chronic active hepatitis. Chronic hepatitis are presented in two forms. That is, first one is the chronic persistent hepatitis and second one is the chronic active hepatitis. जो first वाला है, that is the chronic persistent hepatitis, it is about in 70%, and this is manifested with clinical jaundice. It is manifested with clinical jaundice. और इसमें क्या होता है, जो patient की general condition होती है, that remains general condition, जो patient की होती है, that remains good. Also, जो ये condition होती है, this is benign in nature with elevated transaminases. जो chronic persistent hepatitis होता है, इसमें clinical jaundice होता है, जो patient की general condition होती है, that remains good.
और इस कंडीशन में क्या होता है, एलिवेटेड ट्रांसएमाइनेसिस होती है, ओवरऑल जो पेशेंट होता है वो कंप्लीटली रिकवर हो जाता है, पेशेंट कंप्लीटली रिकवर्स क्रॉनिक परसिस्टेंट हेपेटाइटिस में। Of the second form, that is the chronic active hepatitis. Active hepatitis, this is about 30%. ये जो chronic active hepatitis है, this is manifested as, इसमें chronic jaundice रहता है, chronic jaundice, और जो hepatic enzyme level होती है, hepatic enzyme level that gets increased, वो increase हो जाती है। Chronic active hepatitis also, it may be complicated with cirrhosis of liver, इसमें cirrhosis of liver हो जाता है, and hepatic failure. These are the signs and symptoms of hepatitis B. Now the investigations. How is the hepatitis B diagnosed? It is diagnosed by taking first one, that is the history of illness. History of illness. जब हम लेते हैं हिस्ट्री किसकी, इलनेस की, इससे भी पता चल सकता है हेपेटाइटिस बी। एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, and by physical examination. By physical examination of the patient, hepatitis B is also confirmed, and also by laboratory investigations, laboratory tests. किसके लिए laboratory tests किसके लिए किए जाते हैं? For WBC count, SGPT, alkaline phosphate, antibody to HBC antigen. This confirms the or are helpful to diagnose the condition. These tests confirm the diagnosis. लेबोरेटरी टेस्ट किए जाते हैं किसके लिए? फॉर WBC काउंट के लिए, एंड SGPT स्टैंड्स फॉर सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसएमाइनेज या अल्कलाइन फॉस्फेट्स चेक किए जाते हैं, एंटीबॉडी टू HBC एंटीजन चेक किए जाते हैं, इससे कंफर्म हो जाती है डायग्नोसिस। After the diagnosis is done, the treatment is started. Treatment of hepatitis B. Supportive treatment is given to relieve the symptoms, such as antiemetics to control vomiting and all that. इसमें ज़्यादातर supportive treatment ही दिया जाता है। इसके लिए there is no specific treatment.
there is so no specific treatment. Fortunately, active immunization, इसमें एक्टिव इम्यूनाइजेशन की जाती है. फॉर्चुनेटली एक्टिव इम्यूनाइजेशन विद, किससे एक्टिव इम्यूनाइजेशन विद हेपेटाइटिस बी वैक्सीन. जो जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन होता है, that is available, which is effective in this vaccine. Hepatitis B vaccine is available and is effective in 95% of cases. This is effective in 95% of cases. जो ये वैक्सीन है, this is given in 3 doses. At 1 ml each. जो फर्स्ट 2 डोजेज है एट एन इंटरवल ऑफ 1 month, और जो इसमें थर्ड डोज होता है दैट इज 6 months आफ्टर द फर्स्ट डोज. दिस इज द एक्टिव इम्यूनाइजेशन. अनदर वन इज द इमीडिएट प्रोटेक्शन के लिए, फॉर इमीडिएट प्रोटेक्शन के लिए, फॉर इमीडिएट प्रोटेक्शन हेपेटाइटिस, इमीडिएट प्रोटेक्शन के लिए हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन दिए जाते हैं. हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन HBIG. फॉर इमीडिएट प्रोटेक्शन के लिए हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन दिए जाते हैं एंड आर गिवन, जो होते हैं एक्सपोजर टू हेपेटाइटिस बी वायरस. फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स एंड नर्सेस. और जो ये हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन है, इट शुड बी गिवन विद इन 24 hours. Other measures include other measures also include, that includes all जो blood donors होते, all blood donors जो होते हैं, that should be screened for hepatitis B virus infection. जो भी blood donors होते हैं, that should be screened for hepatitis B virus. Also patient जो है, that should be isolated. Patient should be isolated. किसके लिए? To minimize the spread of infection. To minimize the spread of infection. Another is the use of disposable syringes and needles. डिस्पोजेबल syringes and needles जो है वो यूज करने होते हैं. प्लस स्ट्रिक्ट हैंड वॉशिंग. strict hand washing while taking care of the patient. Also, another point is the patient's temperature, pulse, all vital signs. That is temperature, pulse, respiration, and blood pressure. That should be observed and recorded. Recorded.
another point is the general hygiene जो patient का होता है that should be maintained. Patient का hygiene जो होता है general hygiene that should be maintained. It should be maintained, including oral hygiene and skin care. Itching of the skin may be relieved by tepid sponge bath and antipruritic drugs. जो पेशेंट की न्यूट्रिशनल नीड्स होती है, पेशेंट की न्यूट्रिशनल नीड्स जो होती है दैट शुड बी मेट, दैट शुड बी मेट इन केस ऑफ सीवियर वोमिटिंग. यूजुअली अनकॉमन ही रहता है इसमें, वोमिटिंग एंड नॉशिया अनकॉमन ही रहता है, बट इन सम केसेस इफ देयर इज सीवियर वोमिटिंग देन intravenous fluids may be required. But in absence of vomiting, अगर vomiting uncommon ही रहती है इसमें, absence of vomiting, high carbohydrate, then high carbohydrate diet should be encouraged.